Hello students, today I am taking your next topic, that is exotic carps. Here question is arising that what is the meaning of exotic carp? So exotic carps means those fishes whose native is foreign countries which are introduced in India for commercial purpose, and that is silver carp, grass carp. In our today's lecture, we are discussing about the silver carp. Silver carp. What is the meaning of carp? Carp means toothless fishes that comes under the riverine fish, means freshwater fishes. Okay. First of all, we will see the classification of silver carp. Phylum Chordata, group Pisces, class Osteichthyes, order Cypriniformis, family Cyprinidae, genus Hypothalmactis, species Moltrix. ठीक है, तो as you know that genus first letter is always capital and species first letter is always small. Okay, so we are going to take that uh, fish, that is a silver carp. The scientific name of silver carp is Hypophthalmictis mollitrix. Okay, Hypophthalmictis mollitrix is a scientific name of this silver carp. Here, this is the diagram of this silver carp. Here, dorsal fin is present just opposite to that ventral fin. Then small shiny scales are present, as you know that smalls are large in size in other fishes, but in silver carp here small size small scales are present here. And no barbels totally absent here. You know that के barbels किसको कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर पाया जाता है, वो टोटली यहाँ पर absent होगा. ये barbels are totally absent. Caudal fin are forked. No, आई जस्ट बिलो टू द सेंटर ऑफ द बॉडी. यहाँ पर ये बॉडी का सेंटर है, तो बॉडी के सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये आई इसका प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि एक्चुअल होती कैसी है ये फिश. तो कैरेक्टर में बॉडी इसकी एब्लॉन्ग होती है, स्लाइटली कंप्रेस्ड होती है, हेड आर पॉइंटेड, देखा हमने कि हेड और समवॉट पॉइंटेड. देन स्नाउट ब्लंटी राउंडेड, लोअर जॉ स्लाइटली प्रोट्रूसिंग, small eyes are present, very small scales are present in silver carp. Origin of dorsal fin behind the ventral. Dorsal fin कहाँ थी? Just behind to the ventral. Okay, now midway between tip of snout and base of caudal fin. Here and eye are just downward from the center of this fish. Okay, so these overall are the external morphology of the silver carp. Now food and feeding habit. We will see the food and feeding habit of silver carp in on larval stage. On larval stage, it depends on totally nanoplankton from shifting to the zooplankton. Okay, from early fry to late fry stage, it feeds on zooplankton as main food with phytoplankton as occasional food, but later phytoplankton becomes the major food. सो लार्वल फॉर्म में और जो फ्राई स्टेजेस वगैरह होती है उसमें वो जू प्लैंकटन को ईट करते हैं, देन लार्वल स्टेज में नैनो प्लैंकटन को. बट वो जब अडल्ट हो जाएंगे, एट द टाइम ऑफ द अडल्ट ऑफ दिस फिश, उस टाइम वो टोटली डिपेंड्स हो जाते हैं फाइटोप्लैंकटन. इट टोटल से डिपेंड ऑन द फाइटोप्लैंकटन एट द स्टेज ऑफ अडल्ट. ओके, सो दिस इज द ऑल food and feeding of that silver carp. Okay, so now we will see the growth of this silver carp. Hatching when stocked. When we culture the silver carp from 10 to 12.5 lakh per hectare. When we culture this fish as the ratio of 10 to 12.5 lakh per hectare, it grows 25 to 30 mm in 15 days. 15 days में ही इसका साइज जो हो रहा है वो 25 to 30 mm का हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल द ग्रोथ ऑफ द सिल्वर कार्प. ना मैच्योरिटी, when we see the maturity of silver carp means Hypophthalmactis mollitrix.
So in temperate countries it matures in 2 to 3 years. टेम्परेट कंट्रीज़ में ये 2 से 3 ईयर्स में मैच्योर हो जाती है. उसका बॉडी वेट उस ड्यूरेशन में जो है वो हो जाता है 2 kg का. ओके. नाउ इन वेरी कोल्ड कंट्रीज़, अगर कोल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर इट मैच्योर 5 to 6 ईयर्स. इसको कितना टाइम लग रहा है? 5 to 6 ईयर्स लग जा रहा है. और उस ड्यूरेशन में उसका वेट ओनली 2.5 kg का ही होगा. सो दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ द सिल्वर कार्प. नाउ वी विल सी द fecundity मीन्स spawning. According to Alicuni, in the year of 63, the total fecundity of silver carp ranging from weight from 3.3 to 8.5 kg was found to vary from 1,45,000 to 20,44,000, giving an average of 171 eggs per gram body weight. ठीक है. तो इसका जो स्पानिंग हो रहा है, जो एग्स लेइंग का कैपेसिटी है वो 1,45,000 to 20,45,000 है, सिर्फ 3 to 8 kg के फिश का बॉडी वेट के हिसाब से. ठीक है. सो दिस इज द fecundity ऑफ दिस फिश. नाउ स्पानिंग सीजन मीन्स इट स्पॉन वंस इन अ ईयर and it spawn June to August. Duration of the spawning is June to August, and it spawn once in a year by hypophysation. Hypophysation means what? It induced breeding means artificially breed करा जाता है इसको, इसलिए इसको hypophysation के थ्रू ब्रीडिंग कहा जाता है. ठीक है ना. स्पानिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इट इज़ अ एक्जॉटिक कार्प, दैट्स वाई इट नेटिव ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ चाइना एंड रशिया. ठीक है. चाइना और रशिया के फ्रेश वाटर्स में ये पाई जाती है. देन ट्रांसप्लांटेड एंड कल्चर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. और उधर बहुत सारे टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मीन्स इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देन इंडिया में भी ये फ़िश बहुत अच्छी खासे पैमाने पे पाई जाती है, जो कि नेटिव है अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, बट ट्रांसप्लांट होती है इंडिया में. ओके. ना इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ फास्ट ग्रोइंग कार्प ऑफ इंडिया, हाईली यूजफुल इन कंपोजिट फिश कल्चर. देखिए, इट इज़ ऑल्सो अ फास्ट ग्रोइंग, दैट्स वाई वी कैन हम इसके थ्रू इनकम कमा सकते हैं. जल्दी से ग्रो होगा तो सेल आउट जल्दी होगा, देन हमारी इनकम भी होगी. देन कॉम्पोजिट फिश कल्चर मतलब क्या है? पॉलीकल्चर मीन्स दिस सिल्वर कार्प इज़ अ सरफेस फीडर, वो सरफेस में रहती है यहाँ पर सिल्वर कार्प. देन इसके साथ में हम कतला को भी कल्चर कर सकते हैं. वो कतला के साथ भी रहती है, फैमिलियर है उसकी, कतला के साथ रह सकती है, बिकॉज कतला भी सरफेस फीडर है, सिल्वर कार्प भी सरफेस फीडर है. तो वो यहाँ हम इसको एक साथ अदर फिशेस के साथ भी रख सकते हैं. तो इसमें भी हमारा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होगा कि एक ही टाइम में बहुत सारे फिशेस का कल्चर हो जाएगा. यूजफुल फॉर स्टॉकिंग रिजर्वायर्स एंड टैंक रिच इन फाइटोप्लैंक्टन. सो दिस इज द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिश. ओके. So this is all over the biology of that silver carp, means hypophthalmitis mollictrix. होप कि आप अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू सो मच.